क्या कर रहे हो? थैंक यू सो मच एंड सबसे पहले अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। इसे कहते हैं शुरुआत नए साल की। 2025 आपके लिए, आपके परिवार के लिए ऑसम से भी अमेजिंग हो, इसी दुआ के साथ आगे बढ़ेंगे। साल का पहला बड़ा लॉन्च, साल की सबसे बड़ी पहली पिक्चर। एक बार जोरदार तालियां फॉर गेम चेंजर। एंड सही मायनों में जितने लोग यहाँ पे फ्रंट रो से लेके पीछे तक, जितने हमारे फोटो जर्नलिस्ट्स हैं, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट्स हैं, एडिटर्स हैं, एमिनेंट जर्नलिस्ट, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फिल्म इंडस्ट्री व्हाट इट इज, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही ये सारे स्टार्स हैं, ये सारी फिल्में हैं, सारे सिने लवर्स हैं। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लो आप लोग। Thank you so much for being here. Well, as we said, this is the trailer press meet of Game Changer, ladies and gentlemen. We have global star Ram Charan with us. One of the most loved producers of Indian cinema, Dil Raju sir, हमारे साथ है यहाँ पे. And another brilliant actor, director, lyricist, बहुत कुछ कर लेते हो. S.J. Surya साहब हमारे साथ हैं. Of course, we have Anil Thadani साहब with us, ladies and gentlemen. Of course, and Dr. Lakhani हमारे साथ, योगेश लखानी साहब. I'll be inviting all of them here, and we'll also show you some exceptional stuff on the big screen. Pooja, thank you for that big smile, of course. अच्छी बात है. Ladies and gentlemen, we've all seen the units. The film has got a lot of love. The units have got a lot of love. जो assets हमने दिखाए. In fact, Dallas में जो pre-release event हुआ था, ऐसा event आज तक किसी ने नहीं देखा है. आकृति और समीना and पूजा, इन लोग का अलग चल रहा था. मतलब they were enjoying each and every moment. They're like, हम होते यार, हमको कुछ जाना चाहिए था रामचरण सर के साथ यहाँ पे. So जोरदार तालियां for team Game Changer, ladies and gentlemen. और वो डायलॉग था ना 5 साल वाला, मैं इतना ही कहूंगा, 1 साल, 5 साल, 10 साल. भाई ये हमेशा के लिए ग्लोबल स्टार है. रामचरण के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Of course, one by one I'd be inviting all these lovely people on stage. भारती मैम क्या बोलना चाहती हैं? कुछ तो है ना, लग रहा था, मैं देख रहा था. शी वॉज ऑल्सो देयर. नीतू मैम कोने में बैठ के एकदम शी इज लाइक, हाँ मैं एकदम मैं कैरेक्टर में हूँ, खुद मैं कैरेक्टर में चली गई थी. यहाँ पे फूल नहीं तोड़ने किसी और ने, वो सिर्फ ग्लोबल स्टार कर सकते हैं. आई नो सब लोग फूल उठा के कोशिश करेंगे कि वो कुछ का कुछ बन जाए. सॉरी, बिकॉज यू वेयरिंग समवट लाइक पर्पल टुडे. I know that, Bharti ma'am. Of course. So what we'll do is again, same color, indigo, purple. Okay. So, okay. Nope. Come on. Coming back to the mudda right now, we'll be inviting all these lovely people on stage. We'll start with one of the most celebrated superstars of Indian cinema, ladies and gentlemen. A versatile actor whose remarkable performances have captured hearts, not just in India, balki globally. Global star Ram Charan ke liye ek baar zordar taaliyan. Give it up for him, ladies and gentlemen. Welcome, sir. Thank you so much for being here. And thank you so much for doing this. बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले I'd like to invite on stage this brilliant actor, director, producer, music composer, lyricist. सर कुछ बच्चा है तो वो भी कर ही लीजिए ना. S.J. Surya साहब के लिए जोरदार तालियां. We saw his brilliance on that big screen, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir, for being here. बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए. Thank you so much. And now, as I said, one of the most loved producers, ladies and gentlemen, a stalwart of Indian cinema. He's a visionary producer whose contributions have shaped the landscape of modern cinema, and not just in India, of course, globally इनको बहुत प्यार मिलता है. दिल राजू साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. Of course, the man with the vision. And of course, with all his might, he backs all his projects. Sir, thank you so much for being here. And I know, जब sir बोलते हैं ना, सब चुप हो जाते हैं. लेकिन first things first, global star Ram Charan साहब, I'll start with you. You know, we are so happy to see you here. 4 साल हो गए, sir. Why so much time, sir? 4 साल का gap कौन लेता है, sir? Why would you do that? Hi, Nitin. But Nitin. Yes. Why didn't you ask Shankar sir? I was Namaste, everybody. Namaste. I love you guys. For the first time, I'm feeling very alone right now. Can we also invite Anil Thadani? Of course, sir, of course. Yeah. AA Film se we have Mr. Anil Thadani, ladies and gentlemen. Give it up for him, please. Yeah. How come you forgot him? Man? No. Sir, मुझे डांट पड़ती है वहां से पहले बुलाने पे. Okay, all yours, sir.
So, first time I'm feeling very alone, but also I'm feeling so much welcome. Thanks to all of them here. Thank you, ma'am. Thank you, all of you. Thank you, sirs. Thank you. So, मालूम नहीं यार मेरे को भी जल्दी जल्दी करना है मूवीज मालूम नहीं इतना देर क्यों होता है राइट इसलिए होता है क्योंकि जब वो स्क्रीन पे आता है ना सर आती हैं, सब लोग डूब जाते हैं उसमें. नितिन आप हैदराबाद आ जाओ या मेरे साथ रह जाओ इतना अच्छा बात करते हो मेरा बीवी भी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं लव यू नितिन थैंक यू डार्लिंग थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मेरा न्यू ईयर तो मन गया बाकी देख लो दिल राजू सर दिस वंस फॉर यू नो for the first time in Indian cinema, we saw something like a pre-release event, and that too so massive in Dallas. US चले गए सर आप पूरी की पूरी टीम को लेके. What do you have to say, sir? या सबको नमस्कार. गेम चेंजर के साथ आई वांट समथिंग न्यू. उसमें सोचे क्या कर सकते हैं. सब लोग इंडिया में सब जगह कर रहे हैं ना, चलो सीधा अमेरिका में करेंगे बोल के डैलस में प्लान किए. And the response that you've gotten, sir, over there is like mind-blowing, overwhelming था वो. Talk to us about that. या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट डैलस में हुआ जो ऑलमोस्ट मोर देन 12,000 क्राउड. वो ऑडिटोरियम बाहर भी भीड़ था. सो उतने रिस्पांस मिला और ऑलमोस्ट 4 आवर्स इवेंट सब लोग एंजॉय करते. फाइनली इवेंट जबरदस्त बना. सर सब कुछ जबरदस्ती होता है जब आप कर देते हैं कमाल हो जाता है. दिल राजू साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज. नाउ टॉकिंग टू एस जे सूर्या साहब थैंक यू सो मच एंड आमची मुंबई में आपका स्वागत है सर. बहुत बहुत स्वागत है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट सर 180 मिलियन प्लस व्यूज अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स इन 24 आवर्स इसको मिले हैं. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट एंड द काइंड ऑफ लव दैट योर पार्ट इज गेटिंग सर दैट इज आल्सो सर अमेजिंग सर. Thank you so much. Thank you, press and media, everybody. Wish you a very, very happy New Year. This year, God will bless a lot of success to this all industry, even Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannadam, Bhojpuri, Bengali. Every movie should be a hit. वो सक्सेस गेम चेंजर में शुरू हो रहा है यही मैं सोच रहा हूँ. मेरा हिंदी थोड़ा गलत है बट गेम चेंजर में मैंने वॉइस दिया. ओके बट यू सी दैट माय डबिंग डेफिनेटली विल लव इट बिकॉज when this movie when I got this offer from Shankar sir and Dilraj sir and especially Ram Charan Garu because I'm acting with him, really it's a great honor. Really, I'm telling you, he's a bada star. He's a bada star in South, in bada star in North also. Globally, he has reached everywhere. And he is so kind. He is so very genuine actor. And he has done a fantastic performance in this film. People say, we believe in one thing. We should not talk much about the film, but movie should talk. Definitely this movie will talk. Okay, because I'm not telling about Ram Charan Garu about him, but I'm telling about his performance, what he done as Ramnandan, and especially one big, great character, Appanna. It comes in flashback. It will steal all your heart. Definitely, he has done a fantastic. When I'm saying, I'm getting goosebumps really because I seen some. No, I really mean it. And as an audience, with you only, I'm seeing this song, Jargandi song. Wow, sir, really, the producer Garu, director Garu, and sir, you carried the song so well, sir. Fantastic. You and Kiara did a fantastic. This Prabhudeva Master choreographed. And while dubbing also, while seeing the movie also, but I didn't see this. But I didn't see the whole film. But only my part I was dubbing. But when I'm seeing this song with you all, I got very high. I got high. I really loved it. People will love it for sure. And in North, Shankaranti is a big festival. No? Yeah, substates is a big set. No? So Jan 10th, this movie aa raha hai. Big production value, fantastic concept. The movie is about a war between a galti politician and a true collector. Okay,
So, and why this true collector has a backstory, that is Appanna. Okay. So what the great magic, this writing and the performance and the scene has come out very nicely. It will all entertain you. It will all make you feel fine. It will heal you all for sure for some moment. When we see Ashiki 2, you know who made it as a big hit? Who all are going to pub? Who all are pataving other girls? They made it as a big hit, right? But you know why? Because such a genuine soulful thought. Okay, that's such a soulful thought. When it is, everybody wants to be like that. But only they can carry that emotion for 2.5 hours, not more than that. Right. That's why it's a super hit. Right. Like that. So in society, we have to have a nice thing. What kind of political system should be there? Yeah. Yeah, today evening, Rajamandri में बहुत बड़ा event है. Okay. Yeah. What Pawan Garu doing on field, he is doing as a collector in the movie. Wow. No, yeah. So what I'm trying to say is, yeah, such a genuine thought has been presented by director Shankar Garu, and he has done a fantastic job. Taman Garu did a fantastic music. Yeah. Everybody performed well. I also did a good job. Okay. Hope you'll all enjoy that. Okay. Definitely after success, we all come and meet you. We'll share the success and make it a big success. You all please do watch and enjoy the Game Changer. It is going to be a real game changer. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so. Sir, आपने झूठ बोला. You lied, sir. What, sir? आपने बोला सर मेरे को गलत हिंदी, इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं. No. तालियां बटोर रहे हैं sir. You already killing it. Give it up for him, ladies and gentlemen. I'm sure film देख के बड़ा मजा आने वाला है. No. Movie देखने के बाद बोलिए. अरे सर, हमने अभी बोल दिया. यहाँ पे मिल गया. I take my word. You will all love my dubbing. You will all love my voice. You will all love my performance for sure. We are loving it already, sir. Thank you so much. वापस से ग्लोबल स्टार से एक सवाल है मेरा यहाँ पे. Please talk to us about this visionary filmmaker Shankar sir, because यहाँ पे people are saying Shankar sir and रामचरण दोनों साथ में आ रहे हैं, बहुत बवाल होने वाला है. What do you have to say on that? See, Shankar sir made a remake of Three Idiots in South. It's called Nanban. Yeah. So when they released in Telugu, I was the chief guest for that. I was sitting right. It's a small story. I just want to share. I was sitting next to Shankar sir. एंड मैंने ये सोच रहा था कि अरे कैसे बोलूँ शंकर सर, एक मेरे साथ नहीं किसी के साथ भी इट्स ओके, बट जस्ट मेक ए तेलुगु फिल्म यार. सिर्फ तमिल फिल्म बनाते हो एंड मेरे डैड के साथ बनाओ या एनी ऑफ माई कंटेम्प्रेरी हीरोज. बट वो बोलने के लिए आई डेंट हैव द गट्स ऑल्सो. एंड आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम मिस्टर राज गारू saying, Shankar sir, I was doing last 2 schedules of RRR. I was working. Then Raju sir comes to Ramoji Film City where I was working. He says, Ram, Sir Shankar wants to work. I said, huh? I said, yeah, baad mein bolenge. He said, hello. क्या बाद में बोलेंगे? Shankar sir. He said, आपके पास क्या है? Shankar sir आएगा. Then I got to know it is really Shankar sir. And I was like, shit, Raju sir, call right now. So it is such a dream come true for me. We all have been watching his movies growing up. Recently Mr. Rajmouli sir also said he's the epitome of commercial films, the larger than life. He has defined what is the global film and global cinema and the pan-India cinema. He was the first pan-India director we had. Hats off to him, and I'm so blessed. And yeah, I don't know how my dad will feel, but yeah, I'm very blessed. He should have done it with dad. So I'm very fortunate, and it's a blessing to work in just 5 years to work with a director like Mr. Rajmouli Garu, and then Shankar. As an actor, it is so enriching, and it's so much to learn from both of them. There's there's no comparison, of course, but both of them are like masters of their craft. But S.S. Rajamouli sir and S. Shankar sir. So how do you see this thing ki, you were directed by Rajamouli sir and now Shankar sir? Kya difference hai?
thank God, difference बोला था. You didn't compare them. Not at all, sir. Not at all. So both masters, both of them expect a lot from each and every person, and especially having such beautiful actors. He is one of the craziest person and the craziest actors I've met. He is. And he just said he saw the song and he saw Kiara and me. मैंने तो producer का ये देखा था उसमें. So I think both Mr. Rajmoli sir and me, Mr. Shankar sir, both are taskmasters. They give you every opportunity perform करने के लिए and to be your best. It is very rare to work with such talent, and they keep pushing you always. And there's not one day where थोड़ा relax होने के लिए time मिलता है. नहीं. Every day, even if it's a single shot. I remember one day I was sitting with Shankar sir saying, "Hi Ram, coffee pe?" Yes sir. Abhi first day tha. Then he was having a coffee, I was having a coffee, and suddenly he started looking, not at me, at my hair. And he called assistant director, he said, "Idhar aao, wo iPad leke aao." And he's looking at the iPad and this thing. I said, then मेरे को मालूम पड़ गया, he's not talking to me, वो character के साथ बात कर रहा है, Ram Nanda. I said, "Idhar aao." Then he started touching me. It is very intimidating when somebody touches you like this. I said, I can't say. He said, कुछ बदला क्या? क्योंकि iPad में जो आपको पिक्चर ने भेजा था वो कैरावान में exactly नहीं था. I said, I swear to God, it is only 5% difference from what he sent. But he is so particular and he is so master at his craft. Even that 5%, it doesn't matter. And even if you're Mr. Rajnikant ji or Kamal Hassan ji, he worked with, or myself, doesn't matter. He's so particular. So that's what I enjoyed working with him. And yeah, that's something. Yeah. Right. Dilraju sir, this one's for you. Please tell us, he just talked about the Moola. We usually talk about movie ka budget, but here people are talking about Gano ka budget. They're like, yaar, Gano mein itna tagda budget, and whatever we saw on that big screen is spectacular. Talk to us about it, sir. या पूरा पिक्चर में 5 songs है. 5 songs का बजट 75 करोड़. एक एक गाना 10 दिन 12 दिन ऐसा रिहर्सल्स भी अलग है. एक एक शंकर सर ने एक एक गाना को प्रॉपरली डिज़ाइन करता है. अभी जो देखा है इज़ अ बिग सेट हैदराबाद में डाल के 10 days इसका शूट किए. एक गाना के नाना हैराना करके एक गाना है ना, वो मेलोडी सॉन्ग, वो न्यूजीलैंड में 10 days शूट किए. इसे कुछ नया एक्सपेरिमेंटल किया शंकर सर ने वो गाने के ऊपर. ऐसा वो राम अच्छा सॉन्ग वाइजाग और अमृतसर में ऐसा एक एक गाना 12 दिन 10 दिन ऐसा 75 करोड़ बजट फॉर 5 songs. सर आपको 12 दिन बोला है, मेरे को 18 दिन काम किया था. नहीं रिहर्सल्स का अलग है बोल के बोला ना. आपका एक्स्ट्रा है वो. अलग हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे, ये बढ़िया है. दिलराजू सर, पीपल टॉक अबाउट 75 crores और दिल बैठ जाता है, लेकिन यहाँ एक के बाद एक आप ऐसा गाना बना के प्रोजेक्ट बना के दिल जीत रहे. चैलेंजेस की बात बताइए फॉर अ प्रोड्यूसर. क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इसको बनाने में? वर देयर एनी चैलेंजेस? नहीं, ये मेरा 50th फिल्म है हमारा बैनर में. सो आई वांट समथिंग स्पेशल बोल के मेरा मन में था. और जैसा अभी रामचरण ने बताया ना, उसको शंकर सर का फ़ोन आया जब, उसका जो एक्साइटमेंट है सेम मेरा भी था. मैं काउंट किए, अरे क्या कौन सा नंबर पे आता है फिल्म स्टार्ट करने को. 49 था पहले. नहीं एक फिल्म पहले स्टार्ट करके इसको 50 करो. वो स्पेशल फिल्म बनता है लाइफ में 50 फिल्म बनाने के बाद. सो ये स्क्रिप्ट जब से मैं सुना है ना, ये फिल्म को प्रॉपर बनाना. जब रामचरण का वो RRR चल रहे थे, चलो RRR तो पैन इंडिया फिल्म है, ग्लोबल भी लेके गए नाटू नाटू सॉन्ग के साथ राजमौली सर ने. सो जब भी सोचा है ये फिल्म को ज़बरदस्त बनाना. जनरली शंकर सर ज़बरदस्त बनाते, शंकर सर को सपोर्ट करना एवरीवेयर, उसके लिए 3.5 साल लगा है. एब्सोल्युटली सर, वो मेहनत दिख रही है इस बड़े पर्दे पे. कमिंग टू आवर फेवरेट Mr. Thadani. Hi sir, welcome. So good to see you. So what do you have to say about this collaboration here with Dil Raju Production, Z Studios? Of course, you are distributing the film यहाँ पे. हर किसी को मैंने कहा ना, ए फिल्म्स लग जाता है, सो बहुत राहत मिलती है कि कुछ तो कमाल होने वाला है. 10th January संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं गेम चेंजर के संग. What do you have to say, sir?
Hello, everyone. I'm really thankful for Dilraju sir for letting me a part of this very special 50th film of his. He's been the backbone of this film, such a massive, massive film. Shankar sir, I've dealt with before. He's always made larger than life films. Hopefully, this turns out to be as successful as his previous films that I've been connected with. Surya, he's got a massive, massive fan following, and I've seen his skills, and he's just amazing. As for Charan, I think being such a massive star, I think he's a much, much better human being, a much bigger person, and it's always wonderful dealing with him. I've dealt with him earlier, and it's always been a pleasure. I just hope that this film turns out to be a very glorious, glorious one for our best ever producer. Thank you so much, sir. Thank you. Anil Thadani saab, ladies and gentlemen. Of course. वो बोल रहे थे ना बीच में क्या चल रहा था वो एक है ना अपना जय जय क्या था ये बढ़िया वाले लेके आए हो यार तुम हमसे भी अच्छे लेके आए हो यहाँ पे लवली बस okay I'll come back to our global star quickly if you have to talk about the response that you got in Dallas because आप वहां गए थे let me tell you the entire Indian industry हर किसी की नजरें थी वहां पे किस तरह का response मिलेगा कितना प्यार मिलेगा and we saw the event it was mind blowing talk to us about that sir I think like Dilraju sir said already, I think global platform is very important for all of us, like for Indian film. And especially in Dallas, I think it's such an overwhelming response. हमने सोचा भी नहीं था, and it truly tells us how the global audience are the true cinema lovers, and most of our revenue is coming from there, and they truly love cinema for cinema it is, and it's just not for because I am there or Shankar sir there. They love a good film, and to have that response, I'm very blessed, and just like us and our audience as well. Right. One last question. Dilraju sir, this one's for you. Quickly we'll talk about the cast here. Advani, you have global star Ram Charan. Shankar sir, the visionary filmmaker. How easy or difficult was it to get all of them together, sir? या हो गया? नहीं पहले तो सेट इजी कर दिए और उसके बाद प्रोसेस लॉन्ग हुआ ना सबका इमोशन पकड़ के सब लोग सपोर्ट करे सो एवरीवेयर जब भी शेड्यूल के लिए डेट्स होना सब लोग सपोर्ट करके फिल्म को कंप्लीट करने में मेरे को और शंकर सर को सपोर्ट किया सबके लिए एक बड़ा नमस्कार सर सब लोग बहुत फिल्म्स किया सर 3 साल में मैं एक ही फिल्म किया गेम चेंजर कैसे बोलते He said it है ना सर शिकायत वो सपोर्ट करना भी इज इम्पोर्टेंट ना रामचरण को भी दूसरा फिल्म आए थे नहीं ये कंप्लीट हो गए तो वो स्टार्ट ही नहीं किया ये कंप्लीट होने के बाद अभी स्टार्ट किया All I want audiences की बारी है उन लोगों ने अपना डेडिकेशन प्यार दिखा दिया है अब 10 जनवरी को we'll get to see the movie in theaters ladies and gentlemen इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं and before we wrap this up ladies and gentlemen sir एक रिक्वेस्ट है मुझे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने हमारे eminent journalists ने fans ने बोला था वो they want to do that unpredictable thing with you sir can we all do it together है ना with I'll take the mic unpredictable thing I'll take it Okay. 3, 2, 1. They've said it. They've said it. Thank you so much, sir, for being here. Thank you. Thank you so much. Is team के लिए एक बार जोरदार तालियां. So we'll have a quick Thank picture. you. Please do watch Sir, Game Changer. We'll have a quick picture. We have with us this legendary इंसान, of course. इनका भी नाम legends में लिया जाता है. Bright Outdoor से Dr. योगेश लखानी हमारे साथ. कोई इवेंट पूरा नहीं होता जब तक इनके साथ यहाँ पे वार्तालाप ना हो, मुलाकात ना हो. Please, sir, give it up for him. क्या बात है सर अलग अलग फैन फॉलोइंग चल रही है कैन वी या इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो अप विद द टीम थैंक यू सो मच ओके या वील डू इट Come on, you got to make some more noise for the gentleman here, ladies and gentlemen. Of course, excitement is out of the roof.
इसे कहते हैं साल की सबसे धमाकेदार शुरुआत. Thank you so much, ladies and gentlemen. Global star Ram Charan.